Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Nusrat Shaheen from Pakistan. I have completed my master's in applied psychology from UMT with gold medal, and I have completed my bachelor's in applied psychology from Government College Attack. I have done ADCP from Abyssinian Institute Islamabad. Currently, I'm a trainee clinical psychologist at FCCU, completing my MSCP degree. And this video, now when my introduction is complete, let's move towards my channel. So my channel is for psychology students, anyone who is interested in learning about psychology, anyone who wants to learn about or know in more in depth about human behavior can visit my channel. There are different playlists. There is a series of statistics, SPSS, that I started, and I will complete that as well. There are some videos for the initial stages of SPSS work, and then there are videos of DSM disorders. DSM disorder series is there. There are some webinars that I conducted or I hosted, or the webinars that I was the part of or I was invited as a guest in. So you can watch any of those videos, and the link will be shared below. And if you are new to my channel, kindly like, share, and subscribe. That would help me a lot. I know you hear this a lot, but trust me, when you hit that subscribe button, it really gives very good, pleasant feeling to the video maker or to the YouTuber that you have just subscribed to. Okay, so all of that said, now about today's video. So today's video is one of the videos in the DSM disorder series. The video is of bipolar and related disorders. So before we jump into that, let me show one piece of information. So bipolar disorder is a disorder in which there are basically two poles. Okay, you are either at one side of the spectrum or the other side. Either you're very excited or you're not excited at all. So, genuinely speaking or generally speaking, depression or mania. So, without further ado, let's jump into our today's video. So, bipolar and related disorders. So the contents of the video will be bipolar 1, bipolar 2, cyclothymic disorder. These are the three basic types of bipolar disorders. We will talk about DD's differential diagnosis, presentation criteria and indications, and treatment and management will be another video, which will the treatment and management videos will be a series of videos. Again, with every DSM disorder, there will be a treatment and management plan for that. But I have been planning for that for quite a while, and due to my very intense and very hectic routine, it has been a little bit difficult to carry on with that. So I've decided to first complete this DSM disorder videos and then jump into it. So let's go towards our part one. Bipolar 1 disorder. So bipolar 1 is a type of bipolar disorder in which it is necessary that there is an episode of mania. So what is mania? So mania is basically an elevated or expensive irritable mood, abnormally and persistently increased activity of energy lasting at least 1 week and present most of the day, nearly every day or any duration if hospitalization is necessary. So what happens in manic episode is that the person has increased uh, moods. They are overly excited at times. They are doing overly exciting activities, activities that can be in otherwise seem a little bit destructive or dangerous for them. So the basic criteria along with that is that it has to be present for at least 1 week and most of the day in the week and nearly every day. So this duration has to be completed, duration and frequency, and then the symptoms. So three main things are important when we are talking about any disorder. The first one is duration, and then again
duration, and then again frequency, and then the symptoms. So these three basic things you have to keep in mind, so that you can diagnose a person. Again, who can diagnose a person with a disorder? Only a certified clinical psychologist can give a diagnosis after complete assessment. So remember, you cannot self-diagnose yourself after this video. There are particular criteria that need to be met. These are DSM criteria that need to be met. Again, a certified clinical psychologist can only tell whether it is possible or not to for you to be diagnosed with the bipolar disorder. So here is the criteria of at least one week present most of the day, nearly every day. Okay. Increased energy or activity is seen. ठीक है. Three or more of the following symptoms are present to a significant degree. Following symptoms. So three or more of these symptoms should be present to a significant degree, to a degree where it makes significant impact in their uh, everyday life, in their social life, in their educational life, in their work life, in their personal life. Increased self-esteem or grandiosity. For example, a person in the days of this episode will say that they have the ability to jump from high buildings and not fall at all. They can fly, or they can say that they can jump from high buildings and not hurt a muscle, or they can say that they are the most important people in the world. So they have decreased need of sleep for even when the period of mania is there. During the manic episode, they have decreased need of sleep. Normally, if they sleep, you can say 7 hours. Now, these days, they will be sleeping only 3 hours or even lesser. Sometimes I've even seen some cases where they sleep even more less. So more talkative than usual, or pressure to keep talking. It feels, when you're talking to them, it feels like they have this urge to keep talking. They don't want to stop talking. Flight of ideas or subjective experience, that thoughts are racing. So what happens is that they continuously are talking, and they continuously are giving you ideas and jumping from one idea to another idea. That would be an indication, while clinical interview, that would be an indication that you can search this area for diagnosis. Distractibility, they will easily lose attention. They will easily be drawn to unimportant or irrelevant external stimuluses. um, Increase in goal directed activities. For example, if they have say, for example, if they have to make five case reports, and they have to make 5 case reports by the end of 3 months. So now in the manic episode, they will try to complete all of them in the same day, or in the time period of 1 to 2 days. So they would try to do maximum work, and they would try to achieve maximum in these days. The seventh symptom here is excessive involvement in activities that have a high potential for painful consequences. As I said earlier, they would say that I can jump from the second floor of this building, and none of my muscles will be hurt. So these are some of the criteria. These are the symptoms that three or more of these symptoms have to be present. They have to be present for at least 1 week. They have to be present most of the day, and they have to be present nearly every day for the diagnosis of bipolar 1 disorder. Okay. So if we talk about, this was manic episode, right? So when we talk about hypomanic episode, so in when we talk about bipolar disorder, bipolar, as I said earlier, two poles. Either the episode of mania or hypomania will be there, or the episode of depression will be there. So if we're talking about mania episode, or if we're talking about hypomania episode, or if we're talking about depression episode, so what does that episode
word means. So that episode word means that there will be a duration of days where they will feel this particular they will feel this particular way. As I said, in mania, in manic episode, they will feel extremely elevated mood swings. They will be extremely excited. Heightened self-esteem will be there. So all of these symptoms will be there. So when we're talking about an episode, these are the time of these are the days where they will be feeling this particular moods. So this is basically a mood disorder. So bipolar disorder is basically a mood related disorder. So mood will be affected. Okay, now when we talk about hypomanic episode. So when we talk about hypomanic manic episode, a distinct period of abnormally, okay, again, mania and hypomania are almost the same thing. If you look at all these symptoms, they are the same symptoms from previous episode, that is mania. So what's the difference? The difference is that hypomania is not as severe or as elevated as the manic episode, and it is the intensity of the episode is lesser in hypomania. In mania, the intensity is more, and in hypomania, the intensity is lesser than mania. Another difference is, if you look at the criteria, at least 4 consecutive days. In that manic episode criteria, it was present that it has to be present in 3 consecutive days. If we Okay, so this is at least 1 week. Sorry, it was at least 1 week and present most of the day, right? So now when we come to hypomania, it's not about 1 week, it's about 4 consecutive days. So it has to be present for again, if you look at the frequency, and that is the mania is more frequent. It has to be present for 1 whole week, every day of the day, and most of the time of the day. And when we come to hypomania, it's 4 consecutive days and present most of the day, nearly every day. Then the intensity would be lesser than mania. All the symptoms are same, and 3 or more of these symptoms have to be present, but again, the intensity is lesser than mania. This episode is associated with unequivalent change in functioning that is uncharacteristic of the individual when not symptomatic. This means that normally, when the symptoms are not there, when the person is not having this episode, the person does not behave like that. There are certain days, in those particular days, the person has higher grandiosity or increased self esteem or decreased need of sleep. So, if we come to the Urdu mode, let me summon it up in Urdu as well for my Urdu viewers. Mania, hypomania और डिप्रेशन, ये 3 एपिसोड्स लिंक की जाती हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ. जब हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 2 पोल्स हैं, 2 मुख्तलिफ मुखालिफ जानिब खड़े हुए 2 पोल्स हैं. या तो इंसान एक पोल पे होता है या दूसरे पोल पे होता है, यानी या तो वो मेनिया में होगा या वो डिप्रेशन में होगा, या वो हेपोमेनिया में होगा या वो डिप्रेशन में होगा. अब क्या होगा मेनिया में? उस इंसान की मैनिक एपिसोड जब आ रही होगी, मैनिक एपिसोड का मतलब क्या है? मैनिक एपिसोड का मतलब है कि कुछ दिन होंगे जिन दिनों में उस इंसान की वो सारी अलामात पूरी हो रही होंगी, जो अलामात हमें डीएसएम डिसऑर्डर में बता दी गई हैं कि ये अलामात जरूरी हैं डायग्नोसिस के. ठीक है. अगर हम डिप्रेशन डिप्रेशन के बारे में ऑलमोस्ट हर बंदा जानता है आज के दौर में. अगर हम मैनिक एपिसोड की बात करें तो मैनिक एपिसोड में क्या होता है कि एक इंसान का नॉर्मली जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहता था, जो बहुत ज्यादा जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन्स आती हैं आपके पास, वो ये होती हैं कि पहले ये ऐसे नहीं करता था, अब ऐसे होता है कि ये कुछ दिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो करता है और कहता है कि मैं इस सारे काम एक दिन में कंप्लीट कर लूंगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, इस तरह की बातें करता है. तो ये सिम्टम्स होते हैं उनको. ये जो चीजें, जो वर्बेटम है, ये बेसिकली सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है कि उस इंसान को उस टाइम पे मैनिक एपिसोड होती है. अब मैनिक एपिसोड और हाइपोमैनिक एपिसोड्स के सिम्टम्स सेम है, बिल्कुल सेम है. फर्क कहाँ आता है? जब भी हम कोई डायग्नोसिस कर रहे होते हैं तो हमने 4 चीजों को जहन में रखना होता है: फ्रीक्वेंसी को,
फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स को, यानी वो कितनी दफा हो रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स को, जितनी दफा भी हो रहे हैं उसमें कितना टाइम हो रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी दफा हो रहे हैं, ड्यूरेशन जितनी दफा भी हो रहे हैं उसमें कितना टाइम हो रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी यानी कितनी शिद्दत से हो रहे हैं, ठीक है। और देन कितने दिन तक, यानी उसके जो आगे सिम्टोमेटिक हैं उनकी जो डिफरेंशियल हैं वो हमने जहन में रखने होते। अच्छा, अब हम मैनिक एपिसोड की बात कर रहे थे। मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स के सिम्टम्स सेम होते हैं और 3 से ज्यादा सिम्टम्स होने चाहिए। कौन से? या तो वो बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम शो करेंगे कि मैं बहुत अहम हूँ, मैं बहुत 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 ही कोई अहम चीज हूँ, बहुत ही अहम इंसान हूँ, सबको मेरा ख्याल रखना चाहिए, सबको मेरी खातिर तवाज़ु करना चाहिए। या वो ग्रैंडियोसिटी शो करेंगे कि सेम चीज है ऑलमोस्ट। अच्छा, उसके बाद डिक्रीज नीड फॉर स्लीप। डिक्रीज नीड फॉर स्लीप में क्या होगा कि जो नॉर्मली वो ज्यादा सोते थे, या चलो कम से कम 7 से 8 घंटे, 5 से 6 घंटे सोते थे, अब वो 3 घंटे या उससे भी कम सोएंगे। वर्बेटम भी इसी तरह आता है कि पहले ये सही सोता था, अब काफी अरसे से इसकी नींद भी बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बेतहाशा सोता है और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सोता ही नहीं है। तो ये वर्बेटम होता है। अब ये जो वर्बेटम में आप अगर नोट करें कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा सोता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बिल्कुल सोता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब बहुत ज्यादा सोता है तो डिप्रेशन एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड हो सकती है। जब बिल्कुल नहीं सो पा रहा तो मैनिक एपिसोड हो सकती है। ये वर्बेटम से आपने अपने क्लूज लेने होते हैं कि मैंने कौन से डायग्नोसिस की तरफ जाना है। फिर आपने डीएसएम से हेल्प लेनी होती है, चेकलिस्ट बनानी होती है, ये वाला सिम्टम आ रहा है, ये वाला सिम्टम आ रहा है, ये वाला सिम्टम आ रहा है। अब जब आपने देख लिया कि ये सिम्टम्स बता दिए गए हैं मुझे, उसके बाद आपने क्या देखना है? उसके बाद आपने देखना है ड्यूरेशन को, कितनी दफा होते हैं, कितने दिन होते हैं। अगर मेनिया है तो 1 हफ्ता हर रोज सिम्टम्स आएंगे, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है। 1 हफ्ता हर रोज, 1 वीक, एवरी डे, नियरली एवरी डे, और प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द दिन के काफी सारे हिस्से में सिम्टम्स आते रहेंगे। अब हाइपोमेनिया का कब हमने डायग्नोसिस देना है? हाइपोमेनिया का तब देना है जब पूरा हफ्ता नहीं, सिर्फ 4 दिन लगातार, 4 दिन लगातार सिम्टम्स आ रहे हैं, दिन के ज्यादातर हिस्से में आ रहे हैं और तकरीबन हर रोज आ रहे हैं। तो तब हमने, ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दिनों का, कि मेनिया में 1 हफ्ता, हाइपोमेनिया में 4 लगातार दिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटेंसिटी की, शिद्दत की बात करें तो मेनिया में शिद्दत ज्यादा होगी। एलिवेटेड मूड यानी इंक्रीज्ड एनर्जी जो होती है उनके अंदर, वो मेनिया में ज्यादा शदीद होगी, जबकि हाइपोमेनिया में उसकी निस्बत कम होगी। और ये जितनी भी डिस्टरबेंसेस हैं मूड की, ये जो सिम्टम्स हैं, ये लोग आसानी से देख सकते हो। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। So, major depressive episode. If we talk about major depressive episode, so first criteria is that 5 or more of the following symptoms have to be present during the same 2 week period. Now let me highlight this. 5 or more of the following symptoms. So what this, when we're talking about symptoms, these are the symptoms that we are talking about. 5 or more of these symptoms have to be present during the same 2 week period. Which 2 week period? The period that we talked previously. In mania, we had 1 week of manic episode, and in hypomania, we had, right, 4 days, 4 consecutive days of hypomanic episode. So when we're talking a major depressive episode, we say that in during the same 2 week period, 5 or more of these symptoms have to be present. So depressed mood most of the day, nearly every day, indicated by either subjective or report. How do they talk about it? They would say, so the verbatim of the client, or the verbatim of the presenter of the client, whoever it is, informant of the client, would be, he or she used to sleep, he, she, they, them used to sleep 8 hours a day, but now for
6 months, now it has been 6 months, or it has been 4 months, or it has been 8 months, that he or she or they or them have been sleeping, either sleeping very less for a week, or they have been sleeping more for a week, or the alternate week, or the other week they have been sleeping more. So the verbatim will be, in 1 week, this person is so excited. He wants to do everything. He wants to achieve every goal. He wants to prove to the world that he is the most important person. But in the same alternate week, the person feels like he is not important, feels like he does not want to get up from the bed, and feels like he's not able to move at all, and feels fatigued and tired, even though none of it they have not done anything. So these would be the verbatims of either the client or the informant, and from these verbatims of the client or the informant, you pick out the clues that what you are going to diagnose, or which direction of diagnosis you have to move. So once you have picked up the clues from the verbatim, you come to DSM 5TR, the current version of DSM that is being used by clinicians all over the world. So you come to DSM, or and you look at the symptom list and you checklist, and then you go towards the intensity, frequency, and duration of the symptoms. And once all of that has been checked out, only then you can make a diagnosis. But then again, at the end of the day, you cannot make a diagnosis until you are a certified clinician. So if you feel that you have these symptoms and you're not a certified clinician, please visit a certified clinician near you and tell them about your symptoms and let them assess you. They will make a formal assessment, and after the formal assessment only, they can make a diagnosis. We will talk about the treatment and management in some other video. Coming back to major depressive episode and its symptoms. So, loss of interest, they will not feel any pleasure in the things that they used to feel. For example, the verbatim will be, he used to love playing cards, but now, even when he's in depressed mood, when he's feeling sad or low or empty or hopeless, we tell him to let's play cards. He would not do that. And even if he would do that for us, he would not be happy about it. Okay. So often appears tearful. Again, second symptom is in diminished interest or pleasure, as I just said, significant weight loss when no dieting or weight gain. So in depression, either of the two things can happen. In depression, you can either have an increased appetite, you can either feel more hungry than usual, or you have a decreased appetite, you can feel no hunger at all. It depends from person to person. There are intellectual differences. Some people eat more when they are stressed or depressed, and some people eat less. So the people who eat more will eventually gain more weight, and the people who don't like to eat when they're stressed, depressed, will lose weight. Insomnia or hypersomnia nearly every day. So what happens is that either they will have increased sleep or they will have decreased sleep. So the verbatim can be that they sleep more in 1 week, and they sleep less in the other when they have elevated mood. Or this can also be a verbatim that they sleep more. Nonetheless, they are sleeping more than usual, or they're sleeping more than they used to. Psychomotor agitation or retardation, either they will be restless, they will keep moving their legs and their hands, or they will not move them at all. Fatigue or loss of energy nearly every day, feeling of worthlessness or excessive or inappropriate guilt. They can say that I'm feeling guilty about not being a good citizen, although you know that they are a good citizen. They're people around them. The informant tells you, the informant says that they've always been a good citizen, and still they say that I'm not a good citizen, and they feel extremely guilty about that, and they feel worthless. Diminished ability to think or concentrate, or indecisiveness nearly every day. They cannot think properly, they cannot decide,
recurrent thoughts of death. They would recurrently talk about suicide. They may or may not frequently talk about suicide. Ideation would be there, suicide attempts can be there. Then again, frequency and intensity, based on the frequency and intensity, we do risk analysis. And if admission is required, then the admission is granted to the client or the patient. I hope this is clear now. Coming back to Urdu version. वर्बैटम में डिप्रेशन में क्या होता है कि डिप्रेशन में दो चीजें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो उनका डिप्रेस मूड होगा कि वो अपने आप को कहेंगे कि मैं बहुत खाली महसूस करता हूँ, मैं बहुत उदास महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में कुछ अच्छा हो नहीं सकता। और दूसरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ प्लेयर, यानी कि जिन चीज़ों में पहले उन्हें अच्छा लगता था, जो चीज़ें करके उन्हें पहले अच्छा लगता था, वो चीज़ें अब वो नहीं कर रहे होंगे। या तो क्लाइंट आपको खुद बताएंगे कि पहले मुझे फलां काम करना बहुत पसंद था, लेकिन अब मैं वो करूं भी तो मुझे खुशी नहीं मिलती। या उनके इन्फॉर्मेंट बता सकते हैं, या आप ये दोनों चीजें खुद उनसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। उसके बाद सिम्टम्स मौजूद होने चाहिए 5 से ज्यादा। पहला सिम्टम, एज एज सेड अर्लियर, डिप्रेस मूड, रोने वाले, आंखों में आंसू आ जाना जल्दी, अम, ये बताना कि मुझे बहुत खालीपन महसूस होता है, या मैं बहुत उदास रहता हूँ, या मुझे लगता है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी अलामत होगी कि उनका जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट था वो अब नहीं रहा, उन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट। तीसरी अलामत होगी कि या तो उनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। देखिए, हर इंसान का स्ट्रेस और डिप्रेशन में डिफरेंट बिहेवियर होता है। कुछ लोग स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि मैं स्ट्रेस में ज़्यादा खाती हूँ। कुछ लोग स्ट्रेस हो रहा हो तो बिल्कुल नहीं खा सकते, उनसे नहीं खाया जाता, वो कहते हैं जी मुझे परेशानी हो रही है, मैं नहीं कुछ खा सकता। कुछ लोग डिप्रेशन में ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में कम खाते हैं। अब और अल्टीमेटली जो डिप्रेशन में ज़्यादा खाने के आदी हैं उनका वज़न बढ़ जाएगा, जो डिप्रेशन में कम खाने के आदी हैं उनका वज़न घट जाएगा। अच्छा, उसके बाद हाँ, और एक चीज़ ये ज़हन में रखनी है कि वो वज़न घटाने के लिए कुछ कर नहीं रहे। ये चेक आपने लाज़मी कर लेना है कि वज़न कहीं इस वज़ह से तो नहीं घट रहा कि वो ऑलरेडी कोई वर्ज़िश वग़ैरह कर रहे हैं या उन्होंने खाना छोड़ा हुआ है, और किसी वज़ह से। अच्छा, उसके बाद इंसोम्निया या हाइपोसोम्निया। पहले मैंने एक बात की थी स्टार्ट में कि जब उनको मेनिया और होता है तो उनकी नींद जो है वो बहुत कम हो जाती है। डिप्रेशन में नॉर्मली अमूमन लोगों की नींद ज़्यादा हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अगेन यहाँ पे फिर इनफरादियत आ जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा नींद आती है डिप्रेशन में और स्ट्रेस में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती डिप्रेशन हो या स्ट्रेस हो। तो या तो ये इसका ये वर्बेटम होगा, हो सकता है जो मैंने पहले बताया था कि पहले वो एक हफ्ता ऐसा होता है कि बहुत बहुत सोता है, और एक हफ्ता ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं सोता। या ऐसा वर्बेटम भी हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा सोना शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा सोता है, पहले इतना नहीं सोता था, अब ज्यादा वक्त सोया ही रहता है। ठीक है, तो ये दोनों वर्बेटम हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पांचवी जो अलामत है वो साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन। एजिटेशन होता है कि जी आपकी साइकोमोटर क्या होता है जी, आपकी फॉर एग्जांपल आप टांग हिला रहे होते हो, जब नर्वस होते हैं ना कुछ लोग टांग जोर जोर से हिलाना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग नर्वस हो तो उंगलियों से पटाखे बजाना शुरू हो जाते हैं, तो वो होती है साइकोमोटर एजिटेशन। आप अपनी जो मोटर मूवमेंट्स है, आपकी जो बॉडी है उसको आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, ज्यादा हिला रहे हो अनपर्पजली, जिसका कोई खास पर्पज नहीं। रिटार्डेशन क्या होगी कि वो आप बिल्कुल नहीं हिला रहे, आप बिल्कुल पड़ गए हो, एक बिस्तर पे पड़ गए हो, वहां से आप बिल्कुल नहीं हिल रहे हो, तो दैट वुड बी साइकोमोटर रिटार्डेशन। तो या तो साइकोमोटर एजिटेशन होगी या रिटार्डेशन होगी, अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी। वो कहेंगे जी एक जो 2 हफ्तों का पीरियड है ना जिसमें डिप्रेसिव एपिसोड आई हुई है, उसमें जी हम बहुत थका हुआ महसूस करते जी। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत थकी हुई, जिसम बहुत थका हुआ लगता है, हालांकि कोई काम भी नहीं किया होता, लेकिन बहुत थका हुआ लगता है। ये उनका वर्बैटम होता है मोस्टली जब इस सिम्टम की बारी आती है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, कि यार मैं मेरी ना कोई मेरी इस दुनिया में होने का कोई मकसद नहीं है, मुझे मेरा होने का कोई फायदा नहीं है, मेरे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मेरे ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो फीलिंग ऑफ वर्थ, these will be the verbatims। और excessive और inappropriate guilt, ठीक है, diminished ability to think और concentrate, बहुत बहुत ज्यादा उनको मसला दरपेश होगा, परेशानी आएगी मेजर डिप्रेसिव एपिसोड के दौरान, किसी भी चीज को डिसाइड करने में, किसी भी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करने में, अटेंशन देने में।
ठीक है। अटेंशन की जो है ना डिसेबिलिटी, ये मैनिक एपिसोड में भी होती है और डिप्रेसिव एपिसोड में भी होती है। मैनिक में क्यों हो रही है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो वो एक चीज पे टिक नहीं पा रही। डिप्रेसिव में क्यों है? क्योंकि उनका बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो वो उस चीज को ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। अच्छा, नाम ही है जी कि उनको वो मौत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मौत के बारे में बात करेंगे, किसी के मरने के, अपने मरने के बारे में बात करेंगे, मरने की कोशिश करेंगे। तो ये एक क्लिनिशियन के ऊपर होता है कि वो प्रॉपर डायग्नोस करे कि अगर सुसाइडल आइडिएशन ज्यादा है तो रिस्क फैक्टर एनालिसिस किया जाता है, जिसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना है कि नहीं करना। अच्छा, अब हमने तीनों एपिसोड्स की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि बाइपोलर वन का हम डायग्नोसिस कब देते हैं। बाइपोलर वन का हम डायग्नोसिस तब कह देते हैं जब आपके पास मैनिक एपिसोड हो। ठीक है, आपकी जो प्रेजेंटेशन आ रही है क्लाइंट की, जो वर्बेटम आ रहा है, जो वो बात कर रहे हैं आपसे, उसमें मैनिक एपिसोड का होना मस्ट है। So if you want to diagnose a person with bipolar 1 disorder, there has to be at least one manic episode. So what is the difference? For bipolar 2 disorder, it is necessary to meet the criteria for a current or past hypomanic episode and the criteria for a current or past major depressive episode. There has never been a manic episode. So for the diagnosis of bipolar 1 disorder, manic episode must be there along with depressive episode. But for the diagnosis of bipolar 2 disorder, only hypomanic episode and disorder, depressive episodes should be there, no manic episode. The hypomanic episode can be current or past. So this is the difference between them. अगर हम दोनों के फर्क की बात करें, तो जो हाइपोमैनिक एपिसोड, जो बाइपोलर 2 है, इसमें जब वो आपके पास आते हैं तब, उस दौरान में, या पहले। हाइपोमैनिक एपिसोड यानी मैनिक एपिसोड के 3 या 3 से ज्यादा सिम्टम्स जो 4 कंसेक्टिव डेज रहें, 4 लगातार दिन रहें, वो वाली एपिसोड। हाइपोमैनिक एपिसोड का होना जरूरी है बाइपोलर 2 के लिए, जबकि बाइपोलर 1 के लिए आपके पास मैनिक एपिसोड का होना जरूरी है। और बाइपोलर 2 में आपकी मैनिक एपिसोड नहीं होती। बाइपोलर 2 के लिए आपके पास मैनिक एपिसोड नहीं होगी, तो आप बाइपोलर 2 का डायग्नोसिस देंगे, जबकि बाइपोलर 1 में आपके पास मैनिक एपिसोड जो है उसकी प्रेजेंटेशन होती है। होप ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर यहाँ पर खत्म हुए। अब हम साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर की बात करते हैं। साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में क्या होता है जी? कम से कम 2 साल तक, at least 1 year in children and adult adolescents, there have been numerous episodes of hypomanic symptoms. अब क्या होता है जी? 2 साल बड़े लोगों के लिए और 1 साल छोटे बच्चों के लिए और यंग एडल्ट के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए, ऐसे दिन आते हैं जहां पर हाइपोमैनिक एपिसोड्स होती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से क्राइटेरिया नहीं मीट कर रही होती हाइपोमैनिक एपिसोड्स का। और न्यूमरस पीरियड्स होते हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स के, जो डिप्रेसिव सिम्टम्स के क्राइटेरिया को कंप्लीटली मीट नहीं कर रहे होते। सो फॉर साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, फॉर एटलीस्ट 2 years for adults and at least 1 year in children and adolescents, there have been numerous periods with hypomanic symptoms that do not meet the complete criteria of hypomanic episode, and numerous periods with depressive symptoms that do not meet the criteria for major depressive episode. They lack the intensity or the duration. Uh, as we said that for hypomanic episode, there has to be 4 consecutive days, right? So there can be a case in which there is 2 consecutive days and not completely 4 consecutive days, or there are simultaneous days, or there are alternative days. So there can be a scenario in that. So in that scenario, we will diagnose cyclothymic disorder. So the second criteria is during the above 2 year period, 1 year in children and adolescent, criterion A symptoms have been present for at least half the time, and individual has
not been without the symptoms for more than 2 months at a time. ओके, तो सेकंड क्राइटेरिया में वो कहते हैं कि जो ऊपर हमने 2 साल की बात की कि 2 साल से ये सिम्टम्स आ रहे हैं या कम से कम 1 साल से बच्चों के मामले में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उन 2 सालों में या उस 1 साल में कम से कम अगर साल की बात करें, ठीक है, तो कम से कम 6 महीने सिम्टम्स आते रहे, ठीक है। हाफ, साल में 12 महीने होते हैं ना, तो 12 का हाफ 6 महीने। और अगर हम 2 साल की बात करें तो उसमें से 1 साल सिम्टम्स आते रहे, ठीक है। और इंडिविजुअल जो भी आपके पास आया है क्लाइंट, उसके सिम्टम्स 2 महीने से ज्यादा रहे एट अ टाइम। यानी फर्ज करें कि 1 साल की अगर हम बात करें तो 2 महीने सिम्टम रहे, फिर 1 महीना जो है ना कोई सिम्टम नहीं आया, फिर 2 महीने सिम्टम हुए, फिर 1 महीना कोई सिम्टम नहीं आया। ओके, सो इस तरह से ये सिम्टोमेटिक जो इंक्लिनेशन होती है, इंडिकेशन होती है, वो क्राइटेरिया जो है ना साइक्लोथैमिक में वो कंप्लीटली नहीं मिलता, कंप्लीटली वो मेट नहीं होता, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की हम बात करें तो बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स को जो बाकी डिसऑर्डर्स के साथ हम डिफरेंशिएट करते हैं, एडीएचडी की अगर हम बात करें, अब एडीएचडी के साथ सिमिलर कैसे हो सकता है? एडीएचडी में भी जी एलिवेटेड मूड होता है, ठीक है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, उनका एलिवेटेड मूड होता है, वो भाग दौड़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एडीएचडी में एपिसोड्स नहीं आते, और ये अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में होता है, जबकि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो एपिसोडिक होता है। और उसमें आप में डेवलपमेंटल हिस्ट्री जब आप लेते हो ना क्लिनिकल इंटरव्यू करते वक्त, तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट होती है, अर्ली डेवलपमेंट होती है, वो अप्रोप्रिएट होती है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ बाइपोलर इन फैमिली, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, ठीक है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होगा कि आपका जो इफेक्ट है ना, अच्छा अब आप इसको कैसे चेक करते हो कि बाइपोलर डिसऑर्डर है या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर? क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में भी डिप्रेसिव एपिसोड आ रही है, हो सकता है डिप्रेसिव एपिसोड का ज्यादा दौरानिया हो, ज्यादा इंटेंसिटी हो, तो आप कैसे चेक करते हो? आप एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, साइकेट्रिस्ट के साथ निगोशिएट होता है, साइकेट्रिस्ट एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। अगर एंटी डिप्रेसेंट की वजह से सिम्टम्स कम हो गए, so you can diagnose them with major depressive disorder if they have taken an antidepressant and their symptoms have decreased, or they have controlled symptoms now, then you give the diagnosis of major depressive disorder. Again, this will not be the case in bipolar disorder. That's why how we can differentiate. Okay, schizoaffective disorder. So schizoaffective disorder has hallucinations and delusional episodes, and that are active for 2 weeks without mood episodes. They will be hallucinating, they will be delusional, but there might not be any mood disturbance there, or a minor or minute mood disturbance. But if in bipolar related disorder, the disturbances of psychotic features will not be without the mood disturbances. They will be associated with the mood disturbances. Schizoaffective disorder में क्या होता है कि hallucinations होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जी हमें एक बाबा जी की आवाज सुनाई देती है, बाबा जी नजर नहीं आते, तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होंगी। कहते हैं जी हमें एक बाबा जी दिखाई देते हैं, तो वो विजुअल हेलुसिनेशंस होंगी। एक कहते हैं जी हमें जिस्म पे कीड़े रेंगते महसूस होते हैं, तो वो कौन सी सेंसरी या टेक्टाइल हेलुसिनेशंस होंगी, ठीक है। लेकिन जब हम डिल्यूजन्स की बात करते हैं तो डिल्यूजन्स क्या होती हैं जी? वो कहते हैं कि जी बाबा जी जो हैं, एक पीर हैं जो मेरे सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं, हर हाल में दूर कर देते हैं, ठीक है। या किसी बाबा के पास जाने से दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, तकलीफें खत्म हो जाती हैं, तो दैट वुड बी डिल्यूजन। एक ऐसा अंधा एतमाद एक ऐसी चीज पे जिसका होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, या ये कहना कि या इस तरह की कोई बात करना कि जो हो नहीं सकती, और उस पे बहुत ज्यादा एतमाद, इतना एतमाद कि उस एतमाद को आप हिला नहीं सकते अपनी जगह से, ठीक है। और ये दोनों जो एपिसोड्स हैं हेलुसिनेशंस के और डिल्यूजन्स की,
उनके साथ मूड डिस्टरबेंस का होना जरूरी नहीं, कोई माइनर डिस्टरबेंस हो सकती है, लेकिन जो हमारे क्राइटेरिया है ना मूड डिस्टरबेंसेस के लिए, हाइपोमैनिक, मैनिक एपिसोड, डिप्रेसिव एपिसोड के लिए, वो क्राइटेरियाज नहीं पूरे मीट हो रहे होते। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर वो फर्ज करो कि कोई डिल्यूजन उसको आए, उनको आ ही रही है, या कोई हेलुसिनेशन उनको हो ही रही है, तो वो स्पेसिफिक होगी उस दौरानिए में जिस दौरानिए में उनको एपिसोड्स आ रहे हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर के। अच्छा, इफ द साइकोटिक सिम्टम्स हैव अकर्ड, स्किजोफ्रेनिया, स्किजोफ्रेनिया की हम बात करें, तो स्किजोफ्रेनिया में आपको, आपके पास मेजर डिप्रेसिव एपिसोड नहीं होती, ठीक है, एक्टिव फेजेस के साथ। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर में आपके पास डिप्रेसिव एपिसोड का होना इज अ कंपल्सिव थिंग, राइट? Bipolar related disorders or other substance induced bipolar disorder. अब substance induced, as the name implies, when there is a history of substance and after the substance abuse, the manic episodes or hypomanic episodes have started occurring. Disruptive mood dysregulation disorder. It is diagnosed in the children with 6 to 18 years. They experience irritation and anger most of the time. So the major theme of this disorder is anger or irritation. On the other hand, the irritability that is defined in bipolar disorder only occurs during manic episode. If there is a manic episode, then there will be irritability. And a person returns to feeling a regular level of emotion after a while when the episode ends. And episode of elation or depression follows that elevated mood episode. Anxiety disorders की हम बात करें, तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं, दे आर सर्कल्ड अराउंड एंग्शियस फीलिंग्स और इम्पल्सिव बिहेवियर्स। जबकि हमारे बाइपोलर डिसऑर्डर में देर इज नो क्राइटेरिया फॉर एंग्शियस फीलिंग सेंटर्ड डायग्नोसिस। ओके, सो अब तक आपने जो सीखा है उसको मद्देनजर रखें, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहला जो वर्बेटम है उसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सा डायग्नोसिस आएगा, बाइपोलर 1 आएगा, बाइपोलर 2 आएगा, साइक्लोथाइमिक आएगा, या कोई भी नहीं आएगा। और दूसरे में भी कौन सा डायग्नोसिस आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, या कोई भी नहीं आएगा, या साइक्लोथाइमिक आएगा। पहला वर्बेटम है, आपके पास एक क्लाइंट आए हैं, ठीक है, उनके साथ उनके फादर आए हैं, और वो आपको बता रहे हैं कि पहले दोस्तों के साथ बाहर चला जाता था, अब वो भी छोड़ दिया। कभी तो दिनों बहुत पुरजोश रहता है और कभी दिनों कमरे में अंधेरा करके पड़ा रहता है। दूसरा वर्बेटम है, करीब 2 हफ्ते हो गए, 3 घंटे सोती है बस, और कोई बात मुकम्मल नहीं सुनती, बहुत ज्यादा बातें करती है। आपने बताना है कि क्या ये कोई पर्टिकुलर एपिसोड की बात हो रही है। सेकंड वर्बेटम, किसी पर्टिकुलर एपिसोड की बात हो रही है, तो कौन से एपिसोड की बात हो, और आप उनसे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपके माइंड में आज की वीडियो से जो कुछ आपने सीखा, आप वो बता सकते हैं कि आप उनसे क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फर्स्ट सिनेरियो को लेकर, सेकंड सिनेरियो को लेकर। आपके माइंड में कौन सा एपिसोड आ रहा है, कौन सा डायग्नोसिस आ रहा है, इन्हें देख के जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि वेदर यूर राइट और रॉन्ग, और जिसका सही जवाब होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शूट आउट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी असेसमेंट कैसे की जाती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, टूल्स कौन से होते हैं, सिर्फ टूल्स के नाम और मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की जो वीडियो है, वो जब हमारे डीएसएम डिसऑर्डर वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, देन आई विल स्टार्ट शेयरिंग दोस। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, एंड डू लेट मी नो from these verbatums what you think is the probable diagnosis, or what is the episode that is going on in the verbatums, in the scenarios, and what questions you can ask from the client or the presenter of the client, or the informant of the client in the clinical interview. The first verbatim is, before this he used to go out with his friends, now he doesn't. Sometimes he's very excited for days, and sometimes he just lays down in his room and doesn't come out for days.
So this was the first scenario. Second scenario is it has almost been 2 weeks. She has only slept for 3 hours and she does not listen to anything continuously. She loses attention and she talks a lot. So, this is the second scenario. You can slow down the speed and listen to the scenarios if you don't understand in the one go. Do comment below what you think is happening in the first scenario. What is the probable diagnosis? Which episodes are being mentioned? And in the second scenario, which episode is being mentioned? What is the scenario? And what more questions can you ask for the in the clinical interview to give a proper diagnosis? And the correct answer will get a shout out in the next video. Thank you so much for watching. Thank you so much for stopping by. This is Nusrat Shaheen signing out. Goodbye.